In this video, we are going to discuss about the structure of seeds. Seeds are very interesting as seeds grow to form plants, as seeds grow to produce new plants. Students, in our previous video, we have already discussed the importance of plants. फिर वो animals हों या human being, हम सबको plants की जरूरत है. We all need plants because we get our food from plants. Now students, time has come to move to understand the structure of seed. Students, here you can see that this whole seed is covered by an outer covering. Yes, this outer covering is known as seed coat. Yes students, this outer covering is known as seed coat. So students, ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये इस पूरे सीड को प्रोटेक्ट करके रखता है. यस, सीड कोट सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. जी हाँ, बिकॉज सीड के अंदर में एक बेबी प्लांट है. यस, अ स्मॉल बेबी प्लांट इज देयर इनसाइड द सीड. ऑल्सो कॉटिलिडन्स आर देयर. तो सीड के अंदर में बेबी प्लांट्स एंड कॉटिलिडन्स हैं जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपका जो आउटर कवरिंग है ना, ये जो आउटर कवरिंग है, इसे हम सीड कोट कहते हैं. एंड सीड कोट हमारे बेबी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. यस, दिस आउटर कवरिंग प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू आवर बेबी प्लांट एंड दिस आउटर कवरिंग इज ऑल्सो नोन एज सीड कोट. यस, वी कैन से द आउटर कवरिंग of a seed is known as seed coat. Now students, you might be wondering that where is baby plant? So students, here you can see the greenish area. Yes, ये जो छोटा सा जो green वाला जो area है ना, ये जो green वाला जो part है ना, ये baby plant है. और यही baby plant grow होने के बाद plant में convert होने वाला है. जी हाँ, ये जो baby plant है ना, ये grow होने के बाद प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है. सो स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट दिस बेबी प्लांट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रायो. यस, दिस बेबी प्लांट इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रायो एंड दिस एम्ब्रायो विल ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. दिस एम्ब्रायो विल ग्रो टू फॉर्म अ न्यू प्लांट. नाउ स्टूडेंट्स, ये जो एम्ब्रायो है ना, इसके दो पार्ट्स हैं. इट हैज two parts. One is baby root and another one is baby shoot. Yes, baby root and baby shoot. So students, ये जो एम्ब्रायो का ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इसे हम बेबी रूट कहते हैं. Yes, this portion is known as baby root. Now students, please note, baby root is also known as radicle. Yes, baby root is also known as radicle. Now students, please note, during germination, this baby root rises first from seed and grows in downward direction to give root. Yes, ये जो baby root है ना, ये downward direction में grow होने के बाद रूट में कन्वर्ट होने वाला है. यस स्टूडेंट, ये जो बेबी रूट है ना, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होता है. एंड ऑन द अदर साइड वी हैव बेबी शूट. यस स्टूडेंट, दिस इज नोन एज बेबी शूट. एंड यू शुड ऑल्सो नोट दैट बेबी शूट इज ऑल्सो नोन एज प्लूम्यूल. यस, बेबी शूट इज ऑल्सो नोन एज प्लूम्यूल. नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज नोट that this baby shoot grows in upward direction. Yes, it grows in upward direction and it will give rise to first true leaf. Yes, baby shoot give rise to the first true leaves. Now students, a very important question should come in our mind, and the question is, where does the baby plant get its food? Yes, where does the baby plant get its food? And students, the answer is baby plant get its food from cotyledons. Yes, baby plant
get its food from cotyledons. Students, you should note that cotyledons are also known as endosperm. Yes, cotyledons are also known as endosperms. So students, ये जो cotyledon है ना, ये सीड के मैक्सिमम पार्ट को ऑक्यूपाई करने वाला है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सीड कोट के बाद का जो एरिया है ना, ये कॉटिलेडन है. यस, एंड ये जो कॉटिलेडन है ना, इसने सीड के मैक्सिमम एरिया को, सीड के मैक्सिमम पार्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ है. सो स्टूडेंट्स, ये जो एम्ब्रायो है ना, ये अपना फूड कॉटिलेडन से लेता है. एम्ब्रायो गेट इट्स फूड फ्रॉम cotyledon, and we can say cotyledons or endosperms store food for baby plant. Yes, cotyledon store food for baby plants. Now students, you should not be surprised that not only baby plant, but we also eat cotyledons of many seeds like nuts. We eat cotyledons of many nuts like peanuts, walnuts, etc. So students, we eat cotyledons of many seeds because they are rich in carbohydrates, proteins, vitamins and minerals. So students, during germination, seed requires water, and during germination, this seed is going to absorb water through this tiny hole. Yes, this tiny hole is also known as micropyle. Now students, we have understood the structure of seed, and time has come to move on to discuss some important questions. And the question is, what is seed? Yes, what is seed? And here we can say, seed is embryonic part. Yes, seed is tiny embryonic part. So students, here you can see that inside the seed a baby plant is there, and this baby plant is also known as embryo. Now students, we all know that this embryo will grow and it will form a new plant. It will become a new plant. So यहाँ पे जो embryonic है ना, इसका क्या मतलब है? So students, embryonic का मतलब होता है स्टेज फॉर डेवलपमेंट. जी हाँ, एक ऐसा स्टेज जहां पर कोई चीज डेवलप हो जाए. सो स्टूडेंट्स, यहां पे ये जो बेबी प्लांट है ना, ये जो एम्ब्रायो है ना, ये डेवलपमेंट की स्टेज में है. एंड जर्मिनेशन के टाइम पर ये जो एम्ब्रायो है, ये डेवलप होके एक प्लांट में कन्वर्ट होने वाला है. सो स्टूडेंट्स, हियर वी कैन से दैट सीड इज टाइनी एम्ब्रायोनिक पार्ट. यस, सीड इज tiny embryonic part. We can also see that the seed is protected by an outer cover. Yes, the seed is protected by an outer cover, and this outer covering is known as seed coat. Yes, so here we can say seed is enclosed in a protective layer called seed coat. Now students, we also know that food is also stored inside the seed. This is the cotyledon. Cotyledon, which occupy the largest part of a seed, stores food for embryo. Yes, cotyledon stores food for baby plant. So we can say food is stored inside the seed. Yes, food is stored inside the seed. So students, by the help of these 3 points, we can easily describe seed. So students, time has come to move towards the next question. And the next question is, why do seeds swell when soaked in water? Yes, why do seeds swell when soaked in water? And here is the answer. Because seed absorbs water through tiny hole inside it. Yes, seeds absorb water through tiny hole inside it. So students, we already know that in every seed there is a tiny hole. Yes, a tiny hole is there in every seed. And when we put seed in water, they absorb water
through this tiny hole. So students, here we can see that we have put this seed in water. Now students, here you can see that water has started entering into the seed through this tiny hole. Yes, water has started entering into the seed through this tiny hole. And students, जब ये water इस छोटे से होल के थ्रू सीड में एंटर होना स्टार्ट करता है ना, तो वाटर को एब्जॉर्ब करके, जी हाँ, बहुत सारे वाटर को एब्जॉर्ब करके ये जो सीड है ना, ये स्वेल हो जाने वाला है. सो स्टूडेंट्स, जब बहुत सारे वाटर सीड के अंदर टाइनी होल के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, तो जो हमारा सीड है ना, ये स्वेल हो जाता है. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से बिकॉज सीड एब्जॉर्ब्स वाटर थ्रू टाइनी होल, इट स्वेल्स. सो स्टूडेंट्स, सीड जो है ना, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की वजह से स्वेल हो जाते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सीड कोट एंड what is its function? And students, here is the answer. You can see that this outer covering protects the whole seed. ये जो outer covering है ना, ये पूरे seed को protect करके रखने वाला है. So students, here we can say that the outer covering of seed is called seed coat. Yes, the outer covering of seed is called seed coat. Now students, हम ये भी जानते हैं कि ये जो seed coat है ना, ये इस बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखता है. दिस सीड कोट actually protect the baby plant inside it. So students, we can say that seed coat protect baby plant inside it. Yes, the function of seed coat is to protect the baby plant inside it. Now students, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे शेयर करें.